Actually, today we are going to discuss about 4 units of block 3. First one is physical changes or physical development in adolescent period. Basically. Second one is cognitive changes or cognitive development. Third one is identity, self-concept, self-esteem, peer group relationship, and finally challenges and issues in adolescent development. Okay, so these are the 4 units we are going to discuss. Uh, can we start? Yes, Yes, sir. sir. Yes, okay. First of all, I want to say um, you understand adolescence. Adolescence actually, what is we are talking about whole thing regarding adolescence. Uh, First slide maybe. Uh, First slide, huh? We go through the first slide. Adolescence can be understood as a phase of transition from child to adulthood. Child to adulthood is the phase of transition from being as a phase of transition from child to adulthood. This period generally extends from 12 years to 19 years of age, which is categorized into 3 stages. Uh, First one is early adolescence, second is middle adolescence, and third is late adolescence. From the year 12 to 19, there are 3 categories: early adolescence, middle adolescence, and late adolescence. This transition involves biological, psychological, and social changes. Here, teenagers experience some of the physical milestones as they move from childhood to adolescence. Normal growth during this period includes an increase in body size and sexual maturation, puberty. And just before reaching adulthood, the youngster's behavior seems to be confusing to parents because that time the adolescent people have different mentality, different. Always they are try to experimenting, experience new experiences, and behavior will be always they like to sit with that gossip with your friends and others, not with the family. They are out of family. Suppose they are separated from the family. Family they don't like that time. They think they have to mix with other people. Peer group. They have a very good peer group also. And during adolescence, boys and girls reach adult height and weight also. They feel like adult. Adolescence is the time for growth, spots, and puberty changes. Puberty happens to all individuals, whether boys or girls. In girls, it may start at age 9 or 10, and in boys, it may begin around 12 to 13 years. So, this is about adolescence. Uh, so, far as early adolescence stages, there are 3 stages early adolescence. This is a contradictory phase. It is a phase when the child is not yet mature, and at the same time she is no longer he or she no longer a child. He is not a child actually. This is a transition period. This is time where the individual needs understanding parents, understanding parents, and this is the time the youngster finds its drastic physical changes as a source of irritation. Because of their physical changes, they feel differently and sometimes irritation also. Some who are physically not well grown feel somewhat inferior to others. They feel inferior to others. And there is a lot of somewhat confusion and hesitation and a search for one's own reality, real identity. Actually, during this period, the adolescent boy feel he's like an adult, maybe like hero, like he knows many things. He feels I have an identity. I should have a identity. I am a different person. Not always talking about father and mother.
due to the fact that though physically they look like an adult, mentally they are still children. Mentally they are still children. Parents and elders treat them at one time as a grown up and other time also child. पापा मम्मी के लिए तो बच्चे हैं ना, जो एडोलेसेंट है बच्चे बच्चे होते हैं. This causes problems in identity as to who am I and what am I. ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି. So like that feelings as a early adolescence period. That is the, you remember, early adolescence period continues from 12 years to 14 years. Okay, it Yes, sir. continues from 12 years to 14 years. Next, adolescent developments. Second point, middle childhood. It continues from 14 years to 17 years. It is the phase when child is on the road of transformation. Road of transformation. Transformation means the child or the adolescent boy feels differently. He thinks differently. There are a whole lot of changes that occur, be it physical, mental, cognitive, or sexual also. While most of the girls cross their puberty stage, puberty stage, you understand, boys are still on the road of maturing physically. You know, girls, they get maturity very quickly. After 1 or 2 years, maybe 11 to 12 years, boys get maturity, sexual maturity or anything you say. But girls take maturity at 8 or 9 age, age group. It is that time of life when the young individual is most concerned about one's look, body, appearance. So actually, this is the very cream period of a person. That time the person is looking like very maybe handsome, beautiful. In case of female, it is very beautiful. They look maybe your +2 stage, +2. You are studying +2 level. That in that time, adolescent period will be like that. Or not just you complete your matric. Middle adolescence is the time when the teenagers are developing their unique personality and opinion. They have a different opinion, personality. You know, it is one of the most important process of a psychological process of a person, personality. You feel how you dress up, how you look, how your posture, gesture, everything, all psychological concept, unique personality and opinion also like that. You feel like a hero. Second one is late adolescent, 17 to 19 years. A late adolescence period is very closer to adulthood, and develops youngster develops a firm identity and more stable interest. ये ग्रुप में 17-19 years में आप देखेंगे, you feel the boy like almost matured and thinking process also like that. We'll discuss the cognitive changes, whatever, and other changes. There are a whole lot of changes that occur, be it physical, mental, cognitive, or sexual. While most of the girls cross their puberty stage, boys are still on the road of maturing physically. It is that time. This is that time of life when the sorry, young individual. Middle adolescence is the time when the teenagers are developing their unique personality and opinions. Friends play a pivotal role during these years. Young teenagers take great care to maintain their identity in the peer group. Competitiveness also becomes a major priority in the life of middle terms. Withdrawal from the parents is also one of the most important characteristics found in children of this age. Try to take decision for themselves. At that time, at this stage, uh, parents, they are separated from the parents and they think they have a personal decision making and their personal interest and ability. They engage in different friend circles as per their interest. The late childhood is something different. They feel like adults. Next,
Understood? Hello, Sujit? Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Next is physical development. Physical development, when we were talking about, before that, a little bit I want to say, there are certain things like in late childhood, the adolescents start finalizing their thoughts about role play, want to play their lives, become more concerned about their future, and also so far as their height and weight is concerned. There is a table not written in your slide. I have that table. So 12 plus years, height will be 147 centimeter, weight is 37, height is 148 centimeter, and weight also 38.7. Now, in boys case, it is 147, 12 years age, and weight is 37. In case of girls, it is height is 148 centimeter and weight is 38.7. Like that, in 13 years of age group, boys have height 153 centimeter and weight 40.9. In case of girls, height is 155 centimeter and weight 44. Like that, in 15 years, if you see, the height will be 166 centimeters and weight is 52.6. Like that, in case of girls, 161 height, 51.4 weight. At the age of 18 years, if you see, height will be, in case of boys, 177 centimeter and weight is 65. On the other hand, in case of girls, height is 164 and weight is 54.5. So major changes so far as your height and weight, physical changes occur during this period. Next is physical development. During adolescence, boys and girls reach adult height and weight. It is written also, no problem. Next is sexual and other physical maturation that occurs during puberty result from hormonal changes. There are some hormonal changes. As the adolescent nears puberty, the pituitary gland increases the secretion of a hormone called follicle stimulating hormone by FSH. This hormone then causes physical changes development during adolescence. Additional effects. In girls, FSH activates the ovaries to start producing estrogen, one type of hormone. In boys, FSH causes sperm to develop. So like that, different changes, physical development. Other things are like normal growth during adolescence include both an increase in body size and sexual maturation. During adolescence, boys and girls reach adult height and weight. Early changes are noted with the appearance of sexual secondary characteristics. Secondary characteristics means other all organs of your body that will develop. Adolescents may experience the signs of maturity sooner or later than others. Sexual and other physical maturation that occurs during puberty results from hormonal changes. As the adolescent near puberty, the pituitary gland increases the secretion of the same thing, repeating. So in girls, FSH activates the ovaries to start producing estrogen. In boys, FSH causes sperm to develop. So like that, in case of boys and in case of girls, these are the physical changes occur. Next slide. Actually, so far as suppose a question will be asked, what is physical? Short question may be, what are the physical changes occur during adolescence period? So you have to write these things. Okay. Next slide is puberty. There is a slide in puberty also. Suppose a short question, short note, one mark question. You have different types of questions. Sujit, are you listening? Yes, sir. Hello. Uh, Yes, sir. Suppose there are different questions may be asked. Short questions may be puberty. One question: what is puberty in adolescence? What do you understand by puberty in adolescence? So you have to write very simply. It is the stage of life during which you become biologically and sexually mature. It is the entry into adolescence. Puberty happens to all individuals, boys and girls. In girls, it may start at the age of 9 or 10, and boys, it may begin around 12 to 13 years. Puberty is talked about
a period of turbulence and trials because the boy or girls begin to develop a sex drive, experience mood swings, and face different kinds of pressure. So this is a stage of very difficult stage where many children or adolescents go to any extent without the permission of their parents. They don't know they are trying different experimented things, experimenting different things. Those things not permitted as per family. As a family, officially nobody will entertain these things. Okay. So there are other matter like adolescent male. So far as adolescent males, there are some physical changes. I have the record. Height 4 to 12 inches increase. Hair under the arms, face, voice change. Voice also change. Appearance, pubic hair, body size will increase. With feet, arms, legs, hands, voice changes may occur. As the hormones of puberty increase, adolescent male may begin to experience erections also. During puberty, the male sex organs begin producing sperm, semen, which is composed of sperm and other bodily fluid, may be released during an erection. This is called ejaculation. So different small terms also written so far as physical development is concerned. So you have to know these things. In case of adolescents also like that, height 2 to 10 inches, age of puberty 8 to 13 years, first pubertal change, breast development, hair under the arms 12 at 12 years, menstrual period so far as girls are concerned 10 to 16.5 years of age. Girls experience puberty as a sequence of events. Each girl is different and may progress these changes differently. So it happens to every individual is different. So it happens to others as per their health condition and condition of the health. They also changes occur. There may be an increase in hair growth under the arms and legs. The female's body shape will also begin to change. There may be not only an increase in height or weight, but the hips may get wider. Increase in fat, stomach, legs. This may cause the adolescent girl to experience a time of feeling of clumsy. In that stage, they feel clumsiness also. Adolescent girl will also experience menstruation periods. After girl begin to menstruate, she is able to get pregnant. So this is a very mature stage for the girls. So at that time, parents very conscious about the children, specifically girls. कहाँ जा रहे क्या कहाँ आ रहे क्या कर रहे so everything they are observing a lot रहते हैं क्योंकि this stage is very transition period difficult stage of a human being. Next is after puberty. So first unit we have completed. First unit. Any question or anything about first? Anybody can tell anything? First unit. Hello, Sujit? No, sir. No. Understood, sir. Understood. How many joined? How many students? How many? 26, sir. 26. Very good. Second one is cognitive changes, or you can say cognitive development. This is most important thing you need to understand. So cognitive development refers to the development of the ability to think and reason. It refers to how a person perceives things and gains understanding of his world through the interaction of genetic and learned factors. During early adolescence, they use more complex thinking. They are focused on personal decision making in school and home environment. Adolescent ages 12 through 19 are and should be the formal operational stage of Piaget cognitive development. We'll discuss about Piaget cognitive development. So all students should know about Piaget cognitive development. अच्छे से समझना है. Otherwise, question definitely will come from Piaget cognitive development. Very important. Very important. So every stage and everything you understand. You prepare yourself. Just we'll discuss, but after that you need to understand everything. It is characterized by increased independence for thinking through problems or situations.
So adolescent is a very developmental stage between childhood to adulthood. It refers to period ranging from 12 to 19 years. We understand. So it refers to the development of the ability to think and reason, thinking, reasoning, that capability is developed. It refers to how a person thinks and gains understanding his world through the interaction of genetic and learned factors. Because of our genetic means, because of our parental EA, we understand something, but many things we need to learn. ये हम गारंटी नहीं दे सकते डॉक्टर का बच्चा है तो डॉक्टर होगा कि आप आपका फादर कोई बहुत इंटेलिजेंट पर्सन में भी आप भी इंटेलिजेंट होंगे 100% की गारंटी नहीं दे सकते हम मगर इफ यू ट्राई योर बेस्ट यू नर्चर नर्चर चाहिए उसके लिए मतलब रेगुलरली यू यू हैव टू लाइक दैट practice your knowledge, then definitely you will be a good intelligent person. During early adolescence, they use adolescents use more complex thinking. They are focused on personal decision making in school and home environment. Okay, just a minute. Telephone coming from there. Anyway, so this is about cognitive development. Next slide, please. Any doubt about this slide? No, sir. Second one is the term cognition refers to all processes by which the sensory input is transferred, reduced, elaborated, stored, recovered, and used. Cognitive development refers to the development of the ability to think and reason. It refers to how a person perceives, think, gain understanding the world through the interaction of genetic and specifically first slide, second slide, many things are similar. It includes abstract thinking, the ability to reason from known principles, from own ideas. Abstract thinking means higher level of thinking. Up to 13, 14 years, you are thinking, you have confronted with the different, unless you concrete objects, you cannot understand. But in this stage, when you are 18 years, 17, 18 years, your understanding will be different. Your capacity will be different in so far as thinking process is concerned. So that is about abstract thinking. Next, early adolescence. What is early adolescence? So far as cognitive development is concerned. In early adolescence, the youngsters are focused on personal decision making in school and home environment. When school आप गए हैं, स्कूल में बैठे, immediately they will plan something. They can do. अच्छा कुछ कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं. सोच लिए कुछ ना मतलब समुद्र है समुद्र का किनारे निकल गए पूरा ग्रुप होके किसी को कुछ पता नहीं इस टाइप का एडवेंचरस काम वो लोग कर लेते कि और कोई पर्सनल डिसीजन मेकिंग मान लीजिए कोई साइंटिफिक एग्जीबिशन साइंस एग्जीबिशन हो रहा है they are busy engaged in experimenting something they are showing something good experiment or good project. So like that they can do personal decision making. कुछ टाइम अच्छा भी होता है बुरा भी होता है इन स्टेज में. They begin to demonstrate use of formal logical operation. Formal logic. We'll go to that slide. Formal. You know the cognitive development by Piaget consists of 4 stages. First one is sensory motor stage. Second one is pre-operational. Third is concrete operational, and fourth is formal. So in this stage, adolescent stage, formal operation stages occur. So in that stage, abstract thinking and logical thinking, logical analysis you can do. They begin to form and visualize their own thoughts, views on a variety of topics. Sports are better play, they can play better. What personal appearance are desirable, attractive. What parental rules should be changed. क्या करना है क्या नहीं करना है everything they can decide in early adolescent period. So their decision making will be personal, very personal. They are capable enough to decide something good. Maybe sometimes they wrong. Teacher and parents can advise them. Second one is middle adolescence. The period is
what is the period? 12 to 14 years. Early adult. Middle. Next is middle adolescence. Middle adolescence, the focus of middle adolescence often expands to include more philosophical and futuristic concern. Include, they often questions more extensively. कोई चीज आप बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछना उनका शुरू हो जाता है. ये क्यों हुआ है, why it happens, where it will happen, and how it happens, like Sir, that. middle adolescent is 14 to 17. हाँ 14 to 17. ठीक. Early adolescent 12 to 14, middle adolescent 14 to 17. Okay. So they often questions more extensively and they think about, begin to form their own code of ethics. Their ethics will be different. वो कुछ एंगल से सोच रहे हैं, कुछ बता रहे हैं. So their thinking process is different. They think about possibilities and begin to develop their identity. They begin to develop their identity gradually. Identification चाहिए उनको. हम है कुछ, हमको कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इस टाइप का एटीट्यूड डेवलप होगा. अबाउट पॉसिबिलिटी दे कैन थिंक समथिंग गुड, मे बी समथिंग गुड, समथिंग बैड. ऐसे भी होता है. मैट्रिक का पास, मान लीजिए 10th में आपका एग्जाम खराब हो गया, आप गुस्सा होकर घर से निकल गए, ट्रेन में बैठ के कोलकाता चले गए कि आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम चले गए, गुस्सा हो गए, भुवनेश्वर में है, निकल के चले गए, गुस्सा आ गया, पापा मम्मी आपका कुछ कारण से आपको गुस्सा हुए, मे बी परफॉर्मेंस इज वेरी पुअर 10th क्लास का. उसके बाद आप कुछ दिन घूमेंगे, कहाँ घूमेंगे, घूम घाम के फिर आके घर में पहुंचे, फिर आपका दिमाग में अदर टाइप का थॉट्स आ सकता है. फिर यू आर वेरी सिंसियर एंड गुड स्टूडेंट्स ऑल्सो. आफ्टर दैट you achieve perform very good performance in your academic achievement. तो इसी होता है. So third one is late adolescence that occur between 17 to 19 years. So during late adolescence, complex thinking processes are used to focus on less self-centered concept as well as personal decision making, which include they start thinking more about global concepts such as justice, history, politics. ये सब चीज के बारे में डिस्कशन हो जाता है. पॉलिटिकल पार्टी में भी घुस जाते बहुत सुनते. यंग स्टेज है जो 17 से 19 इयर्स. दे डिबेट एंड डिस्कस ए ग्रेट डील एंड सो इंटॉलरेंस टू अपोजिंग व्यूज. बहुत आर्ग्यूमेंट होता है इस चीज में. लेट एडोलेसेंट स्टेज में आप देखिएगा 17-19 इयर्स में आपको बहुत डाउट होता है. पापा मम्मी कुछ बोल रहे, आप कुछ बोल रहे, तो आर्ग्यूमेंट रेगुलरली पापा मम्मी के साथ, टीचर के साथ भी हो सकता है, और किसका साथ हो सकता है, झगड़ा हो सकता है. वेरी कंफ्यूजिंग स्टेज ये late adolescence. You debate and discuss a great deal and show intolerance to opposing views. And adolescents become capable of logical thought in this stage. However, they may not necessarily translate such thinking. Adolescent understanding of how they and others think continues to change and develop. इस टाइम वो लोग चेंज रहे, दूसरा क्या सोचता होगा मेरा बारे में, मैं क्या सोच रहा हूँ दूसरे के बारे में. So like that thinking in your mind. दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या कमेंट्स देता है मेरा बारे में, क्या सोचता है, तो ये सब चीज आपका दिमाग में आ जाता है. So this is about early adolescence, middle adolescence and late adolescence. So far as your cognitive changes, cognitive development. So next is Piagetian theory of cognitive development. Piaget theory. Jean Piaget was interested in how he is a very Switzerland psychologist, was the most well-known and influential theorist for cognitive development. Piaget was interested in how children reacted to their environment. He told a child's knowledge as composed of schemas. Schema, what is schema? Basic unit of knowledge used to organize past experiences and serve as a basis for understanding new ones. Schema ऐसा एक mental images टाइप का है, जैसे आपका दिमाग में आ जाता है जो छोटे बच्चे के आप साथ होता है. स्कीमा वो तो इन्फेंसी स्टेज मतलब बिगिनिंग में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में बिगिनिंग होता है स्कीमा. तो उसमें क्या होता है, तो आप सोचते हो कि मान लीजिए एक पप्पी है, मतलब स्मॉल डॉग. आप जब एक वो पप्पी को देखते हैं
आप बोलते हैं स्मॉल डॉग है, मान लीजिए 4-5 डॉग आ गए, तो you also compare at that time, and also in your mind all dogs are small in your mind. So ये बड़ा वाला कहाँ से आ गया? So you also change your schema. Therefore there is another two terms, assimilation and accommodation. So you transfer your knowledge, you organize past experience, and also uh, get the idea from new information, and you add to your mental image. So there are some small and there are some big dogs also, and dogs have four legs and one mouth, जो भी उसका है, everything you understand like that. So he proposed four distinct universal stages of cognitive development. In his theory of Piaget, discussed about four distinct universal stages of. First one is sensory motor stage. It continues from birth to 2 years, infancy. Okay, infancy period. Last class also we discussed, it continues from birth to 2 years. Sensory, why it is sensory motor? I'm telling you, intelligence is demonstrated through motor activity without the use of symbols. Intelligence is demonstrated through motor activity without use of symbols. It is based on physical interaction and experiences, and children acquire object permanence at 7 months of age. Like 7 महीने के बच्चे के साथ होता है क्या है, वो मम्मी को उसका देखता है तो मम्मी उसका दिमाग में है. कोई भी आदमी का मान लीजिए एक टॉय है, टॉय को वही वो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है उसका दिमाग में ऐसे आ जाता है कि ये परमानेंटली आएगा. मान लीजिए वो टॉय खो भी गया, कहाँ गायब हो गया, फिर भी इन योर माइंड दैट ऑब्जेक्ट इज, आप नहीं समझेंगे कि वो चला गया, वो है, ऑलरेडी है, वो कहीं नहीं जा पाएगा. मदर है तो मदर है, मदर कहीं भी जाए वो नहीं सोचेगा मदर नहीं गया, यहाँ है. So that is like object permanence, and there are some symbolic representation also in the mind. Mainly in this stage, sensory motor stage, there are some uh, sensation and motor development, movements of the body, like that things develop. Through sensory motor, he understands about the world. First one is sensory motor stage. Second one is pre-operational stage. Pre-operational, that is toddlerhood. Toddlerhood means we and early childhood means 2 years to 7 years, up to 7 years. It will continue. So here intelligence is demonstrated through the use of symbols, and language is mature, and memory, imagination are developed. Egocentric thinking also predominates. Egocentric मतलब दिमाग में आ जाता है बच्चे के साथ कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा पापा है, मेरा मम्मी है, मेरा घर है, एवरीथिंग ही फील्स ये मेरा है. इस टाइप का थिंकिंग जो ईगोसेंट्रिक. So this is about pre-operational stage, toddlerhood and early childhood. Third one is concrete operational stage, that continue from 7 years to 11 years. Elementary and early adolescence, up to 7 to 11 years तक ये चलता है. Next is formal operational stage, that is 11-12 years to up to 19 years continue. Adolescence to adulthood. So about concrete operational, this stage is characterized by 7 types of conservation of task. Last class we discussed conservation, volume, so far as volume, length, area, that idea will be developed. Intelligence is demonstrated through logical and systematic manipulation of symbols related to concrete objects, and operational thinking develops. Egocentric thought also diminishes, कम हो जाता है. उसमें बच्चा समझ जाता है कि ये मेरा नहीं है, ये दूसरा आदमी का है. ये फीलिंग पता चलता है उसका दिमाग में, जो ईगो फीलिंग रहता है वो निकल जाता है. So next is formal operational stage, that is we are discussing. Here, intelligence is demonstrated through the logical use of symbols related to abstract concepts. Abstract concepts मतलब those concepts are maybe you are using some analysis, some analytical thinking,
and some hypothesis like things. Scientific. Yes, scientific thinking. So you are grown up and you understand everything as a adolescence. You can. So adolescence ages 12 to 19 years should be at the formal operational stage. इस stage में formal operational stage काम करता है, in demonstrated through the logical use of symbols related to abstract concepts. It is characterized by an increased independence for thinking through problems and situations. यहाँ आदमी क्या होता है, एडोलेसेंट क्या होता है, फ्री हो जाता है, इंडिपेंडेंट. वो पापा मम्मी का इतना मदद नहीं चाहता है, वो इंडिपेंडेंट जो भी काम करता है अपने से कर लेता है. So far as his thinking process is concerned, through problems and situations, different problems also faces situation. They should be able to understand higher mathematical concept. They are able to learn specific information and skills necessary for an occupation. क्या चाहिए क्या ना चाहिए, उसके बाद adult like behave करता है adolescent. So उसको मे बी 20 years में आजकल तो जॉब भी कर लेते हैं. हाँ, कोई भी प्रोफेशन में जाता है, आप स्पोर्ट्स में कहिए, कोई भी प्रोफेशन में हम लोग जाते हैं, 20 इयर्स को हम लोग पूरा ग्रोन अप हो जाते हैं, मतलब घुसने के लिए रेडी हो जाते हैं. So they should be able to understand higher mathematical concept. They are able to learn specific information and skills necessary for an occupation. The ability can be seen in 5 ways. There are some certain things. During adolescence, individuals become better able to than children to think about what is possible. क्या करना है क्या नहीं करना है, ये डिसीजन भी वो अपने से ले लेता है. During the passage into adolescence, individuals become better able to think about abstract ideas. Abstract ideas मतलब where we need higher level of thinking. Teenagers begin to think more often the process of thinking itself. Adolescents may display increased introspection. Introspection, you understand? This is method of psychology, one of the method of you introspect, you feel, you think, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा. So you predict about different things. Prediction. Thinking tends to be multidimensional. Thinking tends to be become multidimensional. Different area में they look at problems from multiple perspectives. And work also multiple perspective. Adolescents are more likely than children to see things as relatively rather than absolute. Arguments भी बहुत करते हैं. Begin to see their parents' value. पेरेंट्स को भी रेस्पेक्ट देते हैं, कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं. इसे भी होता है कुछ पेरेंट्स के साथ. जो पेरेंट्स वेरी रिजिड है, नहीं जा सकते हो तुम, बाहर नहीं जाना है तुम्हें, घर रहना है, इसे रिजिड हो जाएंगे तो एडोलेसेंट स्टेज में दे आर रिएक्टिव. दो पेरेंट्स थोड़ा फ्लेक्सिबल है उसके लिए ठीक रहता है उस चीज. तो दिस इज अबाउट पियाजियन थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव. समझ में आ गया सब लोग को? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Good. So we'll discuss different things, but when you appear for the examination, you have to write very neat and clean and properly, meaningfully. Okay. Next is information processing. Information processing actually is a model in psychology. There is a information processing theory, I'll tell you. But here information processing is the change of information in any manner detectable by in many manner detectable by an observer. When we deal with information, we do in steps. One way to think of this is to picture the process of acquiring, retaining, and using information as an ability called information. There is an information processing model. I'm telling you, just from our psychological theory, I'm a little bit explaining you for your understanding. So this theory was developed by Atkinson and Shifran. Information processing theory is a 3-stage model of memory. Information initially recorded by the person's sensory system. There is a sensory system. Sensory system by our 5 sense organ. We whatever information, outside information we receive through our sense organs.
information initially recorded by the person's sensory system enters sensory memory with momentary holds the information. For a moment, through our maybe from sound, from sight, from other sense organ, we receive the information, whatever may be, which momentarily holds the information. It then moves to short-term memory. Short-term memory. There is a short-term memory. Short-term memory, talking about, holds information for 15 to 25 seconds in your mind. In this system, the information is stored in terms of its meaning rather than as mere sensory stimulus. Suppose कोई फ्रेंड आपका स्टेशन में, आप स्टेशन गए हैं, स्टेशन में कोई आपका पापा को किसी को छोड़ने के लिए ट्रेन में वो लोग बैठे, somebody coming and I have seen you in place, in which place you are working, like that. So friendship कुछ हो गया, उसका नाम और डिटेल्स यू रिमेम्बर ऑल्सो दैट टाइम. बट व्हेन यू ट्रेन चला गया, आप स्टेशन से निकल के बाहर आ गए, आपका बाइक की मोटरसाइकिल निकाल के आप निकल रहे, दैट टाइम सपोज अनदर पर्सन विल कम, और मे बी आप घर आ गए, घर में कोई पूछा किससे मुलाकात हुआ था स्टेशन में, सो इमीडिएटली यू फॉरगेट, भूल जाते हो उसे. सो दैट इज अबाउट योर शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी 15 सेकंड से 25 सेकंड तक रहता है. हेलो सुजीत, Yes, sir. listening, you are some Yes, sir. disturbance coming, I No, think. sir. No, Okay. sir. हाँ, ठीक है. It then moves to short-term memory, which stores the information for 15 to 25 seconds. Finally, the information can move into long-term memory, which is relatively permanent. Long-term memory, it is relatively permanent. Information is stored as a long-term memory on a relatively permanent basis. So whether the information moves from short-term to long-term memory depends on the kind and amount of rehearsal of the material that is carried out. आप कितना याद किए, कितना टाइम तक वो मटेरियल आपका दिमाग में है, कौन आदमी था, क्या था, एवरीथिंग, इट इज इम्पोर्टेंट. So if you listen or understand the things properly or remember the things, then it will come to your mind. Otherwise, that information lost. इसे होता है बहुत जगह पे, हम लोग भूल जाते हैं. जैसे कि देयर आर सम लॉन्ग टर्म मेमोरी का बात बोल रहे, आपका अपना नाम है, पापा मम्मी का नाम है, आपका गांव का नाम, या और कोई इम्पोर्टेंट आपका रोल नंबर, मे बी मैट्रिक एग्जामिनेशन, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज आप याद रखते बहुत दिन तक, वो भूलते नहीं. मगर कुछ ऐसे डेली लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में, यू आर talking to different situation and you are facing different situation, but you forget. होता है ना. So one way to think of this, to picture the process of acquiring, retaining and using information as an ability called information processing. आपका मटेरियल में भी एक दिया है टेबल, आप देख सकते हैं उसको. सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी. From the environment you receive the सर information. Yes, hello. सर स्टडी मटेरियल में ना रेफरेंसेस और सजेशंस वगैरह हैं, बट जैसे गूगल स्कॉलर पे भी सर्च करने से वो आर्टिकल्स ओपन नहीं हो रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे उसको? नहीं, मटेरियल में तो एवरीथिंग इज देयर. मतलब लिटरेचर दिया है ना, उसमें तो हो जाएगा. आप क्यों और जानना चाहते हैं? if you go through your study material, you will get everything, nothing required, other article and okay. सर मटेरियल नहीं है स्टडी आपके पास? मटेरियल के सजेशंस दिया है. नहीं नहीं, स्टडी मटेरियल के एंड में ही है, मतलब हर चैप्टर के एंड में ना सजेशंस वगैरह दिया हुआ है. तो अच्छा, जब उस उसको चीज सर्च को करने की कोशिश कर रहे थे तो वो नहीं आ रहा है. नहीं, उसको तो मुझे भी पता नहीं है, वो तो पूछना पड़ेगा. आप इग्नो, दे हैव मतलब इंटीग्रेटेड एवरीथिंग, दे नो मे बी. अच्छा ठीक है, कोई ऑफिशियल बात नहीं जो है सर, कोई बात मटेरियल वो लोग दे सकते हैं. ठीक है. ठीक है So सर. otherwise, जी जी. from Google also many things you get if you anything don't understand or anything. Okay. So we have completed the second unit. Now we are going to third unit. Identity, self-concept, self-esteem,
identity, self-concept, self-esteem, peer group relationship. So this is the third unit. Okay. You are acquainted with these terms: identity, self-concept, self-esteem, peer group relationship. Anybody can understand what is self-concept from your experience or knowledge? Sir, image that we have of ourselves in our mind. Any example? Self-concept. सर जैसे इंसान अपनी एबिलिटीज़ को एनालाइज करता है ना एग्ज़ाम वगैरह के टाइम पे या कुछ भी, तो इंसान को मालूम रहता है कि उसका लेवल अभी फ़िलहाल किस लेवल पे चल रहा है। तो वो एक सेल्फ कॉन्सेप्ट का एग्ज़ाम्पल है कि उसको मालूम है कि अभी किस लेवल पे मेरी प्रिपरेशन वगैरह चल रही है, तो वो सेल्फ कॉन्सेप्ट में आएगा। एक पार्ट है, छोटा-सा पार्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब एक बड़ा टर्म है, उसका एक छोटा-सा पार्ट ये हो सकता है एग्ज़ाम्पल। self attributed. Self activity. Actually, self concept is talking about yourself. आप कितना कोई भी काम कर रहे हैं, suppose you are So what we think about ourselves? what you think about yourself and what you understand, what is your capability. Whenever you are doing a task, how much you are confident, and what is your image or what is your thinking process. Everything, different context also use the self concept. Self concept is one type of self image. आई मैं क्या कर सकता हूँ, क्या जानता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, दुनिया के बारे में मुझे, मेरा बारे में लोग क्या जानते हैं, मेरा बारे में लोग क्या सोचते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट, मैं कैसे दिखता हूँ, मेरा कैपेसिटी क्या है, मेरा आइडेंटिटी क्या है, जो भी है। सर हाँ अगर डिफरेंट सिचुएशन में अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग रहता है, जैसे किसी हाई नोट पे हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को एक हायर नोट पे पिच करेंगे एंड दूसरे सिचुएशन में ऐसे कम कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, या एक फिक्स्ड इमेज हम लोग बिल्ड करके हुए चलते हैं? नहीं, फिक्स नहीं है, इट तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन में योर, जो वेरी करता है। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन योर मूड, डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। कोई काम बड़ा इजीली आप कर लेते हैं, कोई काम बहुत डिफिकल्ट लगता है, मे बी इट इज इजियर फॉर अदर्स, आपको डिफिकल्ट लगता है। मान लीजिए, डिफरेंट एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है इसका मतलब। हाँ, मान लीजिए गाड़ी चलाना आपके लिए बड़ा आसान है, और दूसरा आदमी वेरी डिफिकल्ट, फीलिंग डिफिकल्टी ड्राइविंग ए कार, बट उसको खड़ा होके बात करने में बड़ा आसान होता है, स्पीच देने में बहुत आसान होता है, आपको डिफिकल्टी लगता है। मैं कंप्यूटर यूज करना आपके लिए इजी है, दूसरा आदमी के लिए कंप्यूटर यूज करना डिफिकल्ट है। तो कोई काम करने का पहले हम लोगों का जो थिंकिंग रहता है, अपने बारे में हम क्या सोचते हैं, मे बी हम अच्छा कर लेते हैं, मगर नेगेटिव थॉट्स रहता है अपने बारे में, नेगेटिव थिंकिंग रहता है, कर नहीं पाते बहुत चीज, सोचते बहुत, डर रहता है, डर, और डर की वजह से भी बहुत चीज होता नहीं। एक्चुअली क्या है हम लोग देख लेते हैं, because we are discussing here these things. Adolescence actually is a age of exploration, age of self analysis, self evaluation, experimentation. एडोलेसेंट स्टेज एक्सपेरिमेंट करता है ना, अच्छा बुरा क्या है, उसके अंदर क्या है, वहां जाने से क्या हो, जो चीज आप डरेंगे जाने के लिए वो निकल जाएंगे, उनका डर नहीं रहता है, वो इतना नहीं सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, सोचते हैं फिर भी। जो थोड़ा सा ये है बिगिनिंग स्टेज में, जैसे एडोलेसेंस तो ओनली 19 ईयर्स नहीं है, 12 टू 19 ईयर्स, उसके अंदर का जो है सबका अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस रहता है। पीयर ग्रुप, उसका फ्रेंडशिप है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका सोशल रिलेशनशिप जो भी है, अलग अलग सबका रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे सिचुएशन को डील करता है। टॉकिंग अबाउट adolescence is known to be a period of exploratory self analysis and self evaluation. और सेल्फ कंसेप्ट, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी इज ए न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ। मेरा परिचय क्या है, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इस टाइप का जो सिचुएशन है। सो विल गो थ्रू। ओके, फर्स्ट आइडेंटिटी इन एडोलेसेंस। Adolescence is known to be a period of exploratory self-analysis and self
इवैल्यूएशन, हाँ, एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, सेल्फ एनालिसिस करते, कोई काम करने में हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं, ये जाना ठीक रहेगा कि नहीं। मान लीजिए इंडियन आइडल प्रोग्राम है, गाना गाने, अब यू आर ए गुड सिंगर, यू ट्राई योर बेस्ट टू गो टू इंडियन आइडल, गए हैं, पूरा लाइन में रहे, थोड़ी देर का पहले ऐसे टेंशन हुआ, कुछ सोच लिए, आप निकल गए आगे, मतलब बिफोर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम यू लेफ्ट। ऐसे भी होता है कुछ लोगों के साथ, एडोलेसेंट स्टेज में स्टेज होता है, डल जाते हैं आप, पूरा चले गए, पूरा निकल गए आगे वहां से। सेल्फ इवैल्यूएशन भी आप करते हैं। तो आइडेंटिटी इज ए न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ दैट emerges during adolescence. A firmly established identity also provides a sense of uniqueness as a person. Man is unique because of individual differences. आप जो काम करते हैं दूसरा आदमी नहीं कर सकता, आपका फ्रेंड नहीं कर सकता, कि आपका भाई नहीं कर सकता है। So everybody is different, everybody is unique, is own personality, own type of behavior, memory capacity, or thinking process, or doing a task, completing a task, achievement, whatever you think. Everybody is different because of your personality, your mind makeup, your health status, whatever. एक भाई बहुत अच्छा काम कर लेता है, दूसरा भाई कुछ नहीं कर पाता है, इसे भी होता है। So according to Erikson psychological development, Erikson developed a psychosocial development theory. There are 8 stages. Identity in one stage, 5th stage, identity must be perceived by the individual, but also recognized and confirmed by others. Identity तो हम आइडेंटिफिकेशन दे देंगे, हम बोलेंगे हम बहुत बड़ा आदमी है, बताओ दूसरा आदमी क्या बोल रहा है आपका बारे में, वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं, कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं, एक्सेप्टेंस है कि नहीं। सोशल एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिटी, सोशल एक्सेप्टेंस। पापा मम्मी क्या बोल रहे, जो काम आप कर रहे हैं पापा मम्मी बोल रहे नहीं वो नहीं कर पाएगा, उसको नहीं आता है, और मना कर रहे हैं, इसका बिकॉज ऑफ दे आर थिंकिंग, वो सोचते हैं आप नहीं कर पाएंगे, मगर आप बोल रहे खुद कि हम कर लेंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी इज मल्टी डायमेंशनल, इट इंक्लूड फिजिकल एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी। Identity multi-dimensional mean it include physical, sexual, occupational, religious belief. हर एरिया में आइडेंटिटी है, मेल फीमेल है, फिजिकल हेल्थ स्टेटस को लेके फिजिकल आइडेंटिटी अलग है। हाँ, स्पोर्ट्समैन टाइप का दिख रहे आप, पूरा दुबला पतला है, और कुछ है, नाटू है, पूरा लंबा है, टलर है, टॉल है। ऑक्यूपेशनल ऑल्सो, इन ऑक्यूपेशन में भी आपका आइडेंटिटी एक अलग होता है। रिलीजियस बिलीफ है, इज ए गुड रिलीजियस पर्सन, कोई बोलता है नहीं, वो दूसरा बोलता है कि नहीं नास्तिक है। Identification is different, it multi-dimensional. Place to place, our identity is approved differently. Social approval is very important in this case. Identity, हम खुद बोलने से थोड़ी होगा ना, हर चीज नहीं होगा ना। So identity in adolescent stage में identification is very important. So identity development begins with children's awareness that they are separated and unique individual. They are unique individual. Adolescent stage में हर आदमी सोचता है कि हम अपना कुछ करेंगे, हर टाइम पापा मम्मी का क्या कितना नाम लेंगे, हर चीज में मैं कुछ कर सकता हूँ, आई एम कैपेबल एनफ डूइंग दैट थिंग। हम नहीं कहेंगे मेरा पापा थे, मेरा पापा कर सकते हैं, मैं पापा दे सकते, बच्चों वाला बात हो गया, ऐसे नहीं होगा। Adolescents often reject their parents and all that. They stand for so that they can make a clean break from childhood as they attempt to from an identity of their own. अपना आइडेंटिटी दिखाते हैं adolescent. Reject parents. Parents का बात नहीं बोलते हो, जो पेरेंट्स का पीछे पड़ा है पूरा स्पून फीडिंग टाइप का, नहीं, उसमें काम नहीं बनेगा। पूरा अपना आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी achievement during adolescence serves as a basis for our adult expectation and goals for us. पापा सोच रहे आप डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको एक क्रिकेट प्लेयर बनना है, मगर आपका सोचना अलग है, आप सोच रहे डिफरेंटली। सो पापा मम्मी हो, आपका पड़ोस है, आपका रिलेटिव है, टीचर है, जो भी है, एवरीबडी शुड एक्सेप्ट इट, आपका कैपेबिलिटी है, वो होना चाहिए। आप सोच रहे डिफरेंटली, करते भी दूसरा, आप ट्राई कर रहे हैं दूसरा चीज में, मगर सक्सेसफुल नहीं हो पाते, इसलिए पापा मम्मी भी
का पूरा नहीं आ रहा है, वो क्या कर रहा है बेटा पता नहीं, वो अपना ये में कोशिश कर रहा है, मगर हाउ मच इज कैपेबल एनफ टू डूइंग दीज थिंग्स आई डोंट नो। तो इस टाइप का डाउट भी रहता है। नेक्स्ट इज identity crisis in adolescence. Identity crisis. What is identity crisis? Erikson also coined the term identity crisis and believed that it was one of the most important conflicts people face in development. Identity crisis. An identity crisis is a time of intensive analysis and exploration of different ways of looking at oneself. बहुत कुछ चीज सब्जेक्टिव सेंस तो है हम लोगों का, इट इज सब्जेक्टिव सेंस एज वेल एज एन ऑब्जर्वेबल क्वालिटी ऑफ पर्सनल सेमनेस एंड कंटिन्यूटी। सब्जेक्टिव होने से काम नहीं बनेगा, इसलिए तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। सो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द इमर्जेंस ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस ड्यूरिंग द टीनेज इयर्स इन व्हिच पीपल स्ट्रगल बिटवीन फीलिंग्स ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। एरिक्सन का can you go through the Erikson theory? Just a minute. What is that Erikson theory? You just need to discuss. Very important. Erikson theory of psychosocial development. It emphasizes the search for identity during the adolescent years. The fifth stage of Erikson theory is labeled as identity versus role confusion stage. If you go through the Erikson psychosocial development, in the fifth stage you get it. It is the stage of identity versus role confusion stage. Identity, the distinguished character of the individual who each of us is, what our roles are and what we are capable of. Identity means what our role are and what we are capable enough. That is identity. So this stage is a time of major testing. The stage is a major testing time for major testing as people try to determine what is unique and special about themselves. They attempt to discover. कोई सोचता है इंजीनियर बनेगा, कोई मैकेनिक बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई और कुछ बन जाएगा, कोई फार्मासिस्ट बन जाएगा, कोई फैकल्टी बन जाएगा, जो भी है। सो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। सो इट डिपेंड्स ऑन योर रोल, कैसा रोल आप ले रहे एंड व्हाट काइंड्स ऑफ रोल्स आर best suited to play for the rest of their life. In short, their identity. That is called identity. According to Erikson, a time in adolescence of testing to determine one's own unique quality. 50 चीज है दुनिया में, आप उसमें एक चीज का ऊपर ध्यान दीजिए जो कि आप कर सकते हैं। आप अगर कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, तब अब बेकार है, यूजलेस है, गुड फॉर नथिंग। So you have to choose either anything that is your hobby or anything you like. You choose your career like that. One type of career. Another is confusion. Confusion over the most appropriate role to follow in life can lead to lack of stable identity. Adoption of a socially unacceptable role, such as that of a social deviant, or difficulty in maintaining close personal relationship later in life. So during the identity versus role confusion period, pressures to identify what one wants to do with one's life are acutely felt, because these pressures come at a time of major physical changes as well as important changes in what society expects of them. Adolescents can find the period of particularly difficult one. The identity versus role confusion stage has another important characteristic: a decline in reliance on adults for information, with a shift towards using the peer group as a source of social judgment. The peer group becomes increasingly important, enabling adolescents to form close adult-like relationships, helping them to clarify their personal identity. According to Erikson, the identity versus role confusion stage during adolescence marks a pivotal point in psychosocial development, paving the way for continued growth.
For instance, during college, people move into the intimacy versus isolation. After that, there is another stage is intimacy and versus isolation. That stage we don't require. We are talking about identity versus role confusion. So we understand this stage is a stage where you have number of options you have, and you are confused also which type of career you want to. Maybe your +2 level, you have to choose which career and which area you are expert, you have expertise, and you want to go. Oof. Understood, students? Hello. Identity crisis in adolescence. Sir, Understood? Yes, sir. sir, Yes. sir, sir, intimacy versus isolation Uh, after the age of 20. After the age of 18, 19, 18, 19. This continue up to 19 ages. 19, after 19, that stage will come. So far as Erickson's psychosocial stages of, okay, there are 8 stages. After that, these stages will come. Intimacy versus uh, isolation. Intimacy means after 18, 20 years, you are coming to the adult stage, and adult stage means you can say marrying age. Many people also get married after that. So get married means you need a partner. Intimacy means you have to develop your relationship with opposite sex. That is intimacy. If uh, you are able to do it, that is okay. If you are not able to do, isolation occurs. Isolation means depression. अकेला हो जाएंगे आप, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे. जो चाहते हैं वो नहीं मिला आपको. Understood? Next, self-concept and self-esteem in adolescence. Now we are coming to self-concept and self-esteem. Last thing, you understood everything? Identity, Sujit? Yes, sir. Next is self-concept. Self-concept is the accumulation of knowledge about the self. Accumulation of knowledge about the self, such as beliefs regarding personality traits, physical characteristics, abilities, values, and goals, etc. It is the way in which one perceives oneself can be divided into categories such as personal self-concept. I have brown eye, I am attractive. Social concept about how one is regarded by others. People think I have a great sense of humor. So like that feeling, self-concept. You are in adolescent stage, you are thinking about yourself, and other people also thinking about your. So what is the social concept, and what is your own concept? Self concept means what is your personality characteristics. आप introvert है कि extrovert, personality में बहुत, there are so many traits like introvert, extrovert. Somebody is flexible, somebody is rigid. There are different characteristics. Physical characteristics, on the basis of physical characteristics also. You are मान लीजिए muscular health, you are good health, you are definitely you are very confident. Somebody is दुबला पतला बहुत ये, so accordingly personality will be different, thinking process will be different, as per your capability. Ability means maybe you are very intelligent, talented, very clever. Values also, whatever your values and goals in your life depends on your personality. So self concept is accumulation of knowledge about the self, such as beliefs regarding personality. सारा चीज को मिला दीजिए, उसमें आपका सेल्फ कंसेप्ट आ जाता है. हर चीज में आपका सोशल कंसेप्ट क्या है, आपका पर्सनैलिटी का क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एबिलिटी क्या है, हर चीज को मिला के योर पर्सनैलिटी डेवलप होता है. Personality is talking about yourself. So it is a way in which one perceives oneself, can be divided into categories such as personal concept, self-concept, and social concept. I have a brown eye, I am attractive. People think I have a great sense of humor, so like that. So this is about self-concept, meaning. What is the meaning of understood self-concept?
There is a scale also, psychology. In psychology, we measured self-concept. One scale we are using to understand self-concept. Psychology practical. It happens. Next is just a minute. I think a little bit more information. Self-concept is the way in which one perceives oneself, can be divided into categories like that. Next is I want to be a lawyer. Self-concept or self-identity is the sum total of a being's knowledge and understanding of our self, component, physical, psychological, social attributes. Self-concept refers to self-evaluation, self-perception. Self-perception also. आप दिखते कैसे, आपका नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, पॉजिटिव एटीट्यूड, इट रिप्रेजेंट्स द sum of an individual's beliefs about attributes. Self-concept reflects how an adolescent evaluates himself. Sign and negative self-concept also. What are the negative self-concept in adolescent? Doing poorly in school, poor performance in school, having few friends, very limited friends, putting down oneself or others, being excessively jealous about others, hesitating to try new things. हेजिटेशन है, कहाँ बाहर जाने के लिए आपका हेजिटेशन रहता है. रिजेक्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स, कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है आपको, रिजेक्ट कर रहे हैं आपको, नहीं. अवार्ड मिल रहा है, अवार्ड आप वापस दे रहे, नहीं मुझे नहीं चाहिए. सो यू हैव ए डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस, strategy that can be used to improve an adolescent self-concept. There are different strategy also as per psychological counseling. People can change your attitude, behavior, your self-concept maybe, if you try. Understood self-concept? Next, social development. What is social development? Adolescence is the time when the individual searches for his own identity. It happens by the youngsters' interaction with peer and many outsiders, including her teachers, neighborhood, adults, others. At this stage, they enjoy doing work for others and take up examples of great pioneers, heroes, try to mold themselves like them. Adolescent experience many moods. They are able to think more logically. Anybody can explain what is social development in adolescence? Social development का क्या मीनिंग है यहाँ? लीडरशिप क्वालिटी. Leadership quality. You follow, you feel your identification will be great, expert in particular area. क्रिकेट में आप अच्छा खेल रहे, so your identification is different. Social so far as social development, social prestige, people think गांव में आप क्रिकेट अच्छा खेल रहे कि एक you are a सरपंच or any leadership quality you have, or you can good स्पोर्ट्स में अच्छा खेल रहे, और कोई चीज म्यूजिक अच्छा आता है आपको, यू आर ए गुड सिंगर, डांसर, गांव में कोई एक्टिविटी हो रहा है, आपका स्कूल में कोई एक्टिविटी, सो एवरीबडी लुक आफ्टर यू, कहाँ गया है वो, सो ढूंढ रहे सब लोग आपको. सो यू हैव ए गुड रेपुटेशन सो फार एज सोसाइटी इज कंसर्न. सोसाइटी और सोसाइटल प्रेस्टीज जो भी सोच रहे, आइडेंटिटी इज इम्पोर्टेंट. हीरो, यू आर लाइक ए हीरो फ्रॉम फॉर योर घर के लिए आप वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, बिकॉज यू आर कैपेबल एनफ टू डूइंग ऑलराउंडर है, सब काम कर देते हैं, घर का काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, और कुछ चीज भी कर लेते हैं. So adolescence is a time when the individual searches for her own identity. It happens by the youngsters interaction with peer, many outsider, including her teachers, neighborhood. टीचर के हिसाब से वेरी गुड स्टूडेंट, अच्छा लड़का है. नेबर, पड़ोस में भी आपका थोड़ा प्रेस्टीज है. अडल्ट है, अडल्ट के साथ अदर, because you are involved with all types of activities in your area, you have a good reputation. These are social development. Next is self-esteem. Self-esteem in adolescence.
Self-esteem is one of the important factor required by anybody to succeed in life. Important factor required by anybody to succeed in life. Self-esteem. Many teenagers will have a low self-esteem, and it is important to know major reasons for self-esteem and find out ways and means to combat the low self-esteem. So, self-esteem क्या है? Nobody can tell. Self-esteem कौन हो? सुजीत. The self-evaluation, Self-confidence. self-confidence. Evaluation, self-confidence. आत्मविश्वास कितने अच्छी? What is your self-esteem? अपने ऊपर कितना विश्वास है आपका? कोई भी काम करने के लिए आप कितना कॉन्फिडेंट है? हाँ, दूसरा आदमी डर जाता है, आप इमीडिएटली यू टेक अप द रिस्क लेके काम करने के लिए तैयार है. तो मे बी कोई भी काम करने के लिए, घर का काम है, बाहर का काम है, पढ़ाई में, एनीथिंग यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू. आप कितना कर सकते हैं नहीं कर सकते बात अलग है, मगर यू आर कॉन्फिडेंट. देयर आर सम कॉजेस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइक हेरिडिटरी, लिविंग कंडीशंस, lack of proper condition, physiological, nahi, lack of proper education, sorry, that is mistake, not condition, that is lack of proper education, physiological, societal implications, fear for future, diseases. आप अगर देखिए आजकल काफी लोग, सब लोग एजुकेटेड है, गांव से सब आके शहर में रहते हैं, और काफी लोग मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर रिलेटेड है, क्योंकि कोई काम करने के लिए पहले कंप्यूटर का बहुत आजकल जानता है कि नहीं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज कंप्यूटर रिलेटेड, बच्चों से बड़े तक. इट इज ऑल्सो ए रिक्वायरमेंट. सो आप अगर एजुकेटेड है, कंप्यूटर लिटरेट है, पढ़ाई अच्छा किए हैं, सोसाइटी में और स्कूल में, कॉलेज में आपका इम्पोर्टेंस है, सो एवरीबॉडी विल लाइक यू, दे विल गिव द असाइनमेंट. कोई अगर कोई सुटेबल पर्सन नहीं मिला, इमीडिएटली दे टेक अप यू. तो कॉजेस ये है कि हेरिडिटरी हो जाता है, पापा मम्मी उसका ऐसा है, वो कुछ नहीं कर रहे, गरीब आदमी है, लिविंग कंडीशन बहुत पुअर कंडीशन है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, फिजियोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है, सोसाइटी में भी कोई इंपोर्टेंस नहीं है, फियर फॉर फ्यूचर के लिए क्या करेंगे क्या नहीं है, दे कैन नॉट टेक डिसीजंस. डिजीजेस है, जब भी पूछो क्या है, बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कोई काम नहीं कर पाते हो, कोई भी जरूरत है तो वो आके किसी को हेल्प नहीं कर सकते. So these are this emphasizes your self-esteem. If high self-esteem है, you are capable enough. If low self-esteem है, you are incapable. You cannot do any risk, any work. Many teenagers will have low self-esteem, and it is important to know major reasons for low self-esteem and find out ways and means to combat the low esteem. Self-esteem भी बढ़ा सकता है आदमी, अगर उसको एनकरेजमेंट दिया जाएगा, उसको कुछ मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी काम करने के लिए, डेफिनेटली वो डेवलप कर जाएगा. डर रहा है, गरीब आदमी है, और कुछ है, सिंपल है, जो भी, उसको मौका मिलना चाहिए. मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आगे बढ़ सकता है. भय है उसके अंदर, फियर है, क्या करेगा क्या नहीं होगा, डिजीजेस है, ये सब प्रॉब्लम है. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस, ये ईगोसेंट्रिज्म, ये एडोलेसेंट स्टेज में ईगो भी रहता है. दे आर एक्सट्रीमली कॉन्शियस ऑफ व्हाट अदर्स थिंक ऑफ देम, देयर अपीयरेंस. बहुत कॉन्शियस होते हैं, बाल को पूरा साइज करके, ये करके, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर ड्रेस अप, पोस्चर, गेस्चर, एवरीथिंग. उनको पूरा टिप टॉप होके रहना है. तो ये स्टेज ईगोसेंट्रिज्म, वो एक फीलिंग्स रहता है यंग स्टेज. हो गया, इतना है सेकंड का. थर्ड, सॉरी, दिस वन इज थर्ड. सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कंसेप्ट, और क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, पीयर ग्रुप रिलेशनशिप, ये सारा हो गया इसमें.
ये हो गया आइडेंटिटी इन एडोलेसेंस. सेकंड इज आइडेंटिटी क्राइसिस इन एडोलेसेंस. एरिक्सन थ्योरी को भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है आपको. सेल्फ कंसेप्ट के बारे में आइडिया लेना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें. सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सोशल डेवलपमेंट, सेल्फ एस्टीम अगेन. नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं लास्ट वन, चैलेंजेस एंड इश्यूज इन एडोलेसेंट डेवलपमेंट. कौन बताएगा चैलेंजेस क्या है, इश्यूज क्या है एडोलेसेंट डेवलपमेंट में? व्हाट आर द चैलेंजेस और इश्यूज? एडोलेसेंट ऐसे एक स्टेज है, इट इज स्टेज वेयर different things changes, biological, cognitive, psychological, social characteristics changing. ये सब चीज चेंज हो जाता है. फिजिकल चेंजेस, लॉट ऑफ फिजिकल चेंजेस वी डिस्कस्ड. कॉग्निटिव चेंजेस होता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है. बिकॉज ऑफ फिजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस, ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल चेंजेस होगा. इमोशनली आपका डिफरेंट होगा. यू विल बी इरिटेटेबल. एंजाइटी ऑल्सो बढ़ेगा. टेंशन एंजाइटी होगा, उसके साथ अच्छा चीज भी हो सकता है. You'll be happy also, enjoying your life. Social characteristics. Adolescence may be defined as the period within the lifespan when most of the person's biological, cognitive, and psychological and social characteristics are changing from what is typically considered childlike to what is considered adult-like. Childlike to आप adult-like हो जाएंगे. बच्चों से बड़े हो गए. 19 years में आप घर का एक की मेंबर हो गए. भविष्य हो गए कि आप घर चलाना है. हमें अब बूढ़ा हो गए. पापा मम्मी आपका बोलेंगे नाउ आई एम ओल्ड, आई कैन नॉट डू एवरीथिंग, यू हैव टू मैनेज द हाउस. वो मैनेजमेंट में उसका मैनेजमेंट अलग है. वो पीयर ग्रुप में घूमना फिरना, सिनेमा देखना और कुछ करना है. तो सारी चीज, मोटरसाइकिल चलाना, कहाँ जाना है पिकनिक में, कहाँ पार्टी बनाना है, इस सब चीज में ज्यादा एडोलेसेंस में होता है एक्सप्लोरेशन. कोई ड्रिंक कर लिया, अल्कोहल खा लिया, स्मोकिंग कर रहा है और कुछ कर रहा है, ड्रग्स यूज कर दिया, इसको मारपीट कर लिया. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स हैपेंस इन दिस स्टेज, जो कि विदाउट द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स. जब पुलिस आके पकड़ता है कि कोई इंफॉर्मेशन आता है दूसरी जगह से, तब पेरेंट्स को पता चलता है. अदरवाइज दे आर बिजी इन देयर ओन वर्क. एडोलेसेंट स्टेज ऐसा होता है. Any other thing you want to say? Sujit, hello. 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 Yes, sir. और क्या एनीथिंग यू थिंक चैलेंजेस क्या हो सकता है इन एडोलेसेंट स्टेज? एनीबॉडी कैन टेल? करने में दिक्कत आती है. क्या होता है? अगेन रिपीट. हेलो सर, दिक्कत आती है क्योंकि नॉलेज में ना ज्यादातर हम लोगों को नॉलेज नहीं होता है, प्रॉपर एजुकेशन की कमी होती है, उसकी वजह से हम लोग कोप नहीं कर पाते. क्या दिक्कत होती है? दिक्कत मतलब किस चीज में दिक्कत होती है? सर कोपिंग, जैसे इंसान अगर सैड है, समझ में नहीं आ रहा है उसको. जैसे आजकल एक नया टर्म है, जैसे डिप्रेशन को हर इंसान अपना अपसेट हो रहा है या सैड हो रहा है, सब डिप्रेशन में काउंट कर रहे हैं अपने आप. तो एक लैक ऑफ एजुकेशन होता है, मतलब इंसान सेल्फ कोपिंग मैकेनिज्म सबको ना डेवलप नहीं कर पाता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो सर एंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं. और एंगर, फ्रस्ट्रेशन होता है कि नहीं? हाँ जी, फ्रस्ट्रेशन भी होता है. फ्रस्ट्रेशन होता है, कंफ्यूजन भी होता है कोई काम करने में. रिस्क भी क्या ले लेते. सही क्या गलत तो चुनने में भी प्रॉब्लम होती है. बिल्कुल बिल्कुल. सो एडोलेसेंट स्टेज हैज a number of challenges and issues in adolescent development, नहीं?
बहुत कुछ होता है। हाँ पर्सनल, हेलो क्या बोले? ओके, so challenges in adolescence, this is the slide. Adolescence may be defined as the period within the lifespan when most of the person's biological, cognitive, psychological, and social characteristics are changing from what is typically considered childlike to what is considered adult like. छोटे बच्चे से बड़ा हो जाएगा वो अभी मैच्योर्ड है, कुछ भी कर सकता है। पापा मम्मी कहेंगे वोटिंग एज हो गया, ये हो गया, आप अभी घर को संभालो, एवरीथिंग यू अंडरस्टैंड। मगर for the adolescent the period is a dramatic challenge, one requiring adjustment to changes in the self, in the family and in the peer group. चेंजेस चाहिए उसको। इतना फ्रेंड सर्कल है जो सुबह जाते हैं और रात को आता है घर पर, उसको टाइम मिलता है, क्या करता है क्या नहीं है, रोज रोज पापा उसके ऊपर झगड़ा होता है। So during adolescence, parents should play a supportive role. Yes. कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है आपका बात। I cannot listen whatever you are saying. Okay, I'm continuing. During adolescence, parents should play a supportive role. Parents should play a supportive role. They have all the necessary experience, resources, maturity to make this transition as easy as possible. पेरेंट्स के पास हर चीज का सुविधा है ना, पेरेंट्स के पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, रिसोर्सेस है, जो चाहिए आदमी को, मैच्योरिटी भी है, एक्सपीरियंस इतना है कि वो मैच्योर्ड है, हर चीज जानता है, 50 साल 60 साल का 40 साल का एक्सपीरियंस है उनको, टू मेक दिस ट्रांजिशन आज इजी एज पॉसिबल। सो पेरेंट्स कैन टीच एंड डिस्कस विद द adolescent, but many times adolescent cannot understand parents arguments. एडोलिसेंट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या करना है, ये पापा मम्मी को समझ में नहीं आता है। बहुत टाइम कंफ्यूजन है, दोनों में झगड़ा होता है, खाना पीना बंद हो जाता है, ये होता है, झगड़ा होता है घर में। सर मेरा एक सवाल है। पूछिए। जो भी पेरेंट्स है वो भी तो एक एडोलेसेंस की एज से गुजर चुके होंगे ना, बिल्कुल तो वो कैसे बच्चों का प्रॉब्लम नहीं समझ सकते हैं, झगड़ा क्यों हो रहे हैं, मेरा जानना ये है। हाँ नहीं, पापा मम्मी जो है उनको एक्सपीरियंस है, वो भी समझा रहे हैं, समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबका तो पर्सनालिटी समान नहीं है ना, पर्सनालिटी फैक्टर और मेमोरी, उसका प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, पापा मम्मी का भी बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए दो लड़का है, एक लड़की है, और कुछ मतलब जमीन है और कुछ काम है घर का, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है उसके साथ। तो उसको स्ट्रगल करते करते कोई एडोलेसेंट मान लीजिए है, उसका समस्या समाधान करने में वो कोशिश तो करते हैं, मगर किसी को बहुत टाइम पे पापा का बात बेटा नहीं समझता है, बेटा का बात पापा नहीं समझता है। मे बी ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू नंबर ऑफ टास्क, नंबर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेंशन रहता है पापा मम्मी के साथ, तो समझने नहीं चाहते। कुछ लोग रिजिड भी होते हैं, रिजिड आदमी है, गुस्सा वाला आदमी रहते हैं, पर्सनालिटी सबका समान नहीं होता है ना, तो उसमें मे बी एडोलेसेंट जो बच्चा है वो भी गुस्से टाइप का है, झगड़ा करता है, ये करता है, पापा मम्मी के साथ पैसा चाहिए, मुझे 1000 चाहिए, 5000 चाहिए, मुझे इमीडिएट दीजिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सुसाइड कर लूंगा और कुछ कर लूंगा। सो दे हैव डिफरेंट डिमांड्स ऑल्सो। एडोलेसेंट डिमांड्स को पापा मम्मी कैसे देखते हैं, वो कितना समझते हैं और कितना कैपेबल एनफ है सॉल्व करने के लिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उनका भी प्रॉब्लम तो है ना। So there is also a one thing, there is also generation gap between the parents. हाँ जनरेशन गैप भी है, जैसे वो बताए आपका स्टूडेंट की उसके साथ भी वो टाइम गुजर के आए हैं, एडोलेसेंट स्टेज, जब भी वो एडोलेसेंट से उनको भी पता है उस स्टेज में प्रॉब्लम होता है, फिर भी क्यों नहीं समझ रहे।
वो बात है, पुराना समय में अलग था, सिचुएशन अलग था। अभी मॉडर्न स्टेज है, इस टाइम में सबको मोबाइल फोन चाहिए, फिर अपडेट स्मार्टफोन चाहिए, फिर नॉर्मल फोन नहीं चाहिए, सबको मोटरसाइकिल चाहिए। बच्चों को जो एडोलेसेंट है उनको ये चाहिए, पार्टी जाना है और सिनेमा देखना है और कुछ करना है, नंबर ऑफ थिंग्स दे रिक्वायर, जो कि पापा मम्मी का बस का बात नहीं होता है। उनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल क्राइसिस रहता है, जमीन का काम रहता है, झगड़ा रहता है घर में, और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफिस का टेंशन रहता है, वो भी बेटा को समझना चाहिए है कि नहीं? सो उसमें क्या होता है, दोनों में झगड़ा भी हो जाता है कभी कभी। फिर भी पापा मम्मी कोशिश करते हैं। मान लीजिए 3-4 बेटा है, बेटा बेटी है, उनको फिर पालने में उनको तो दिक्कत होती है ना, वो भी समझना चाहिए। नहीं, हाउ टू सॉल्व एवरीबॉडीज प्रॉब्लम। हाँ, 3-4 मान लीजिए चिल्ड्रन है, 2-4 है, जिसका एक है वो सॉल्व कर सकता है, मगर 3-4-5 है जिसका पास, वो कैसे सॉल्व करेगा? उसके लिए बहुत तो डिफिकल्ट हो जाता है। फाइनेंशियल क्राइसिस में भी मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है, उसका समस्या बहुत होता है। मैं छोटा सा नौकरी कर रहा है, सर छोटा, हाँ, समझ रहे सर कई हैं? बार पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं कि बच्चे से कोई गलती ना हो जाए, इसलिए हाँ, हाँ, ज्यादा हाँ, हाँ, समझाने के चक्कर हाँ, में भी हाँ, लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बाहर जाने के लिए हुँ, रात रात को मत जाओ, रात को ये प्रॉब्लम हाँ, होगा, वो होगा। लड़की क्योंकि होगा तो एडोलेशन बिल्कुल नहीं पीरियड छोड़ेगी। में बच्चों में ये सेंस नहीं रहता है कि हम सही और गलत के चूज़ नहीं कर पाता है बहुत, तो ना पेरेंट्स ओवर उसका तो प्रोटेक्टिंग हो जाते हैं बोल के बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल, लड़ाई बिल्कुल, झगड़ा बिल्कुल। कई बार हो जाता है घर में। हाँ, क्योंकि एडोलेसेंस स्टेज में उसका माइंडसेट तो अलग रहता है, उसको सिनेमा देखना है, बाय हुक और क्रुक कैसे भी जाना है। चाहे हुँ, पापा दे, नहीं दे, मैं चोरी करके लेना है पैसा, पैसा चाहिए हुँ, उसको। तो उस दिमाग में वो रहता है, पापा-मम्मी चाहते मत जाओ, ये अच्छा नहीं है, मेरा पास अभी पैसा नहीं है, मैं प्रॉब्लम में फाइनेंशियल क्राइसिस सफ़र कर रहा हूँ, बहुत काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बात तो वो समझने के लिए तैयार नहीं है, तो दोनों में झगड़ा होता है, मारपीट होता है। कभी-कभी वो निकल के चले जाते हैं, सुसाइड भी कोई कर लेता है। आजकल जो सुसाइड होता है और क्या है? और और जो ओवर प्रोटेक्टिव आप बोले, पापा, एक हुँ, एक केस मेरा पास आया था। एज़ ए साइकोलॉजिस्ट आल्सो समटाइम्स आई एम वर्किंग। तो हुँ, पापा-मम्मी है, दोनों डॉक्टर हैं, समझ रहे हैं? आपको हुँ, बता रहा हूँ, दोनों डॉक्टर हैं, हुँ, हुँ, रीडर ना प्रोफेसर। पैसा बहुत है, कार सुबह वो लोग जाते हैं, फिर इवनिंग में आते हैं, बीच में और हुँ, घर नहीं आते। वो एक प्रॉब्लम लेके आए थे, उनका एक लड़की है, लड़की दिन भर रहता है, वो भी डॉक्टर का कुछ पढ़ाई कर रही थी। वो आके ड्राइवर के साथ ड्राइवर लेके कॉलेज में छोड़ के आता है, फिर कॉलेज से यहाँ आता है, मगर वो अकेली रहती है दोपहर में। इन हुँ, बिटवीन क्या प्रॉब्लम हुआ, ही हैज गुड रिलेशनशिप विथ ड्राइवर ऑल्सो यंग पर्सन। सो ड्राइवर के साथ भाग के निकल गया। पापा मम्मी हुँ, जानते जानते एक दिन मैंने इवनिंग में जाके पता चला, क्योंकि दे आर एब्सेंट इन द होल डे एंड दे आर हुँ, बिजी ऑल्सो। डॉक्टर है, उनको टाइम नहीं है, पैसा बहुत है, मगर उनको पता हुँ, नहीं ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। अकेला एक लड़की को छोड़ के घर में जाना नहीं चाहिए, उनको रहना चाहिए, हुँ, रेगुलर फ़ोन फ़ोन करना चाहिए। सो इस टाइप का एक प्रॉब्लम भी हो जाता है उनके साथ। तो इसलिए हुँ। क्या होता है, बहुत पैसा होने से भी प्रॉब्लम है, कम पैसा होने से भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एडोलेसेंस स्टेज में होता है। इसलिए पापा-मम्मी कितना और कूल माइंडेड। मम्मी-पापा हमेशा सोचते हैं कि मेरा बच्चा कोई गलती ना करे, कोई हाँ, दुःख ना मगर आए उनको, गलती कर हमेशा सब लेता है मगर। सही करे। हाँ, मगर वो गलती ये कर लेते हैं। सोच कई बार बड़ा बर्डन हो जाता है बच्चे के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ कुछ टाइम में भी एडोलेसेंट जो चिल्ड्रन है, वो लोग का डिमांड सही रहता है, पापा-मम्मी समझते नहीं प्रॉब्लम को, तो उसमें झगड़ा होता है, वो घर छोड़ के निकल जाता है और कुछ करता है। तो इस टाइप का इट इज़ हैपनिंग रेगुलर। आजकल तो ज़्यादा होता है ये सब चीज़। फिर भी एज़ पर सर आवर, अभी तो फिर भी मार-पिटाई कम मिलता है, हम लोगों के टाइम तो बहुत मार-पिटाई मिलता था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल तो एक्सेस हो जाता है और छोटा-छोटा मारपीट नहीं होता है आजकल, एक्सेस निकल के चला गया, चोरी करके ले गया जो था घर से लेके निकल गया अपना। चला गया और दूसरे के साथ मिलके चला गया कहाँ दूर, आएगा नहीं। 1 महीना 2 महीना तक नहीं आएगा, जब पैसा खत्म हो जाएगा तब आएगा। इस टाइप का चीज़ें होता है। Anyway, so during adolescence, parents should play a supportive role. They have all the necessary experience, resources, maturity to make this transition as easy as possible. हाँ, because उनका पास experience है, necessary resources है, maturity भी है, इसके लिए वो
हेल्प कर सकते हैं एज पर आवर मटेरियल, एज पर आवर जो कंसेप्ट है यहाँ उसको देख रहे हैं हम। नेक्स्ट नेक्स्ट ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, मेनली चैलेंजेस इश्यूज है। एक्नॉलेजिंग सेक्सुअलिटी, एक्चुअली एक एज 18-19 साल बहुत डेंजरस एज है। उसी एज में पापा मम्मी को पता नहीं था बेटा बेटी के साथ क्या हो रहा है, वो लोग कितना कॉन्शियस है अबाउट देयर जेंडर एंड एवरीथिंग। So talking about sex, especially the sexuality of the adolescent makes the parents feel uncomfortable. वो क्या सेक्सुअलिटी के बारे में बात करेंगे बच्चे के साथ, वो नहीं चाहते हैं, तो अवॉइड कर लेते हैं। अवॉइड करने से क्या होता है, बच्चा उधर जाके दूसरा काम में बिजी है, किसके साथ उसका रिलेशनशिप हो गया और कुछ कर लिया गलत काम, तो ये भी डेवलप हो जाता है। इसलिए आजकल पेरेंट्स विश दैट यंगस्टर्स हैव सेफ एंड फुलफिलिंग सेक्सुअल लाइफ। अच्छा सेफ्टी रहना चाहिए, सब ठीक ठाक रहना चाहिए, एंड दे मे फील अनईजी अबाउट सेक्स एजुकेशन। कॉलेज में तो आजकल सब कॉलेज में चलता है सेक्स एजुकेशन, आप लोग जानते हैं कि नहीं? सेक्स एजुकेशन टीचिंग भी होता है कुछ जगह पे। एंड द मेन इश्यू ऑफ द पेरेंट्स इज टू मेक अप देयर माइंड रिगार्डिंग एड्रेसिंग द सेक्सुअल इश्यू रेदर देन अवॉइड इट। हाँ, पेरेंट्स का अभी ये हो गया कि इसे सेक्सुअल इश्यू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एडोलेसेंट स्टेज में वो लोगों का कुछ ये नहीं रहता है, उसका बारे में इंटरेस्ट भी न था। वो मे बी देर बहुत कुछ जानते हैं मगर दे आर नॉट शेयरिंग, पापा मम्मी को कुछ पता नहीं उसके बारे में, ऐसी चीज भी होता है। और कुछ पेरेंट्स दे मे फील अनईजी अबाउट सेक्स एजुकेशन, अनईजी फील करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट सम प्रॉब्लम्स ऑकर ऑल्सो। नेक्स्ट इज this is the last I think slide. हाई रिस्क बिहेवियर। हाई रिस्क बिहेवियर क्या है आपको पता है? एनीबडी नो? HIV एड्स आपको पता है? HIV एड्स, हेलो यस सर। सुजीत, जी सर, पता है। पता है ना HIV एड्स? वो एक्चुअली HIV एड्स प्रोग्राम में मैं भी पहले कुछ काम कर रहा था। हाँ, उसमें उड़ीसा में कौन सा जगह है HIV प्रोन? HIV कोई बोल सकता है, बता सकता है? नहीं सर, हेलो, आइडिया नहीं। बिल्कुल आइडिया नहीं। हाँ आइडिया नहीं है सर। हाँ, क्या? बरहमपुर, गंजा yes, yes. बरहमपुर हाँ, बरहमपुर मतलब गंजाम डिस्ट्रिक्ट इज वेरी प्रोन टू बरहमपुर HIV एड्स। बिकॉज क्या होता है, रीजन पता है किसी को? हाँ, रीजन किसको पता है? हाँ, हेलो, सर उन लोग को इतना नॉलेज नहीं है ना रिलेशनशिप के बारे में, तो नहीं अनप्रोटेक्ट सेक्स करते हैं ना। भाई देर हाई रिस्क बरहमपुर में कुछ जगह पे कहीं, किसको पता है कि बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन? रीजन किसको पता है? एनीबडी बिलोंग टू बरहमपुर? नो? हाँ सर। गंजाम, गंजाम का कोई नहीं है? हाँ सर है। गंजाम का है? हाँ सर वो आपको आइडिया है? ସେମାନେ ସାର୍ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ हाँ ସୁରାଟ हाँ ଓ हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ବାହାରୁ बिल्कुल ଜାଣିଛନ୍ତି हाँ ଜାଣିଛନ୍ତି, good. Actually many youngsters like adolescents, they don't have job and they don't have proper education also, they are poor basically, जो बस्ती में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जो भी है, तो दे आर गोइंग टू सुराट फॉर जॉब्स, फॉर ऑक्यूपेशनल जॉब। सुराट में क्या है, गुजरात जानते हैं ना? गुजरात में सुराट में आप देखेंगे आधा सुराट उड़ीसा पीपल, सब उड़ीसा से जाके वहां घर बना दिए। वहां टेक्सटाइल मिल बहुत है, बहुत मिल है, इंडस्ट्री है, सो दे आर गेटिंग जॉब्स। क्लॉथ फैक्ट्रीज। हाँ, फैक्ट्रीज भरे हैं, 10,000 15,000 20,000 में जॉब मिल जाता है। जब मतलब कुछ काम करना पड़ता है, कोई भी काम, कोई लेबर काम कर लिया, कोई मिस्त्री काम कर लिया, कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम कर रहा है। सो डिफरेंट डिफरेंट स्किल एरिया में अगर आप एक्सपर्ट भी नहीं है वहां सीख लेंगे। हाँ, एक आदमी दूसरा आदमी का लिंक में चला जाता है। एक्चुअली उस स्टेज में पापा मम्मी जो रहते हैं ब्रह्मपुर या गंजाम में, उन लोग को दे आर नॉट नाउडेज दे गेट द आइडिया। पहले उन लोगों को पता नहीं था बहुत लोग, फिर भी अभी भी बहुत लोग जा रहे हैं जॉब के लिए।
तो उनका क्या होता है, जॉब करने के बाद 2-3 महीने के बाद, मतलब 6 महीने के बाद उनका एक फेस्टिवल होता है यहाँ गाँव में। कोई आपका फेस्टिवल होता है ना, कौन-सा फेस्टिवल होता है? मान लीजिए होली है, दशहरा है, कुछ भी है। आ जाते हैं वो लोग, आने के बाद उनका फैमिली समझते हैं कि बेटा मेरा बड़ा हो गया, उसका शादी करवा देते हैं, तो शादी करवा देते हैं। वो भी राजी होता है, शादी हो गया। एक बच्चे भी हो गया, बच्चा भी हो 1-2 साल में। तो उसके बाद उसको पता नहीं फैमिली को, वो दूसरा शादी भी किया अपने से, विदाउट द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स। कहाँ? सुराट में। सो दोनों जगह पे, यहाँ शादी किया, वहाँ भी शादी किया, वहाँ भी एक फैमिली है। तो दीज पीपल आर वेरी प्रोन टू एचआईवी एड्स। हाँ, वो तो ह्यूमन डेफिशिएंसी है ना, आप जानते हैं वायरस जो। तो अनलेस आप नंबर ऑफ रिलेशनशिप रखेंगे, सेक्सुअल रिलेशनशिप, यू आर कन्फ्रंटेड विथ एचआईवी एड्स। बहुत भयानक है, जिसमें आपका जान भी जा सकता है। तो इसे बरहमपुर का बहुत लोग है, बिकॉज आई वाज इन ए प्रोग्राम, गवर्नमेंट प्रोग्राम, कोऑर्डिनेटर होके मैं खुर्दा जिला का काम कर रहा था, अप टू बालुंगा, नॉट बरहमपुर। बालुंगा में बरहमपुर में और एक अनदर कोऑर्डिनेटर हुआ दिया। तो उसमें मैंने देखा सारा जितना गांव मुझे मिला था, देर आर 40 विलेजेस हम लोग को मिला था। 40 विलेज में हम लोग को रेगुलरली हम लोग देखे 5-6 एचआईवी एड्स प्रोन, जो फेस्टिवल होता है उस टाइम में हम लोग एचआईवी टेस्ट करते हैं। उन लोगों को कुछ ना कुछ बहाना बना के ले लेते हैं, ट्रेनिंग फेनिंग कुछ मीटिंग करके उसी बहाने टेस्टिंग करवाते हैं गांव में। टेस्टिंग करने से 4-5 निकलते हैं एचआईवी एड्स। तो इतना है कि उनके इस एरिया में क्यों हो रहा है, तो हम लोग फिर कांटेक्ट किए। तो बहुत पहले का बात है ये। तो उससे पता चला मेनी पीपल आर माइग्रेटेड टू सुराट। तो उसमें क्या होता है, उसका वाइफ को भी एचआईवी हो जाता है, उसका बच्चा को भी एचआईवी हो जाता है। उसमें होल फैमिली इज अफेक्टेड बाय एचआईवी एड्स। दिस इज हैपनिंग इन एडोलेसेंट स्टेज। ये 17 साल 20 साल के अंदर, 15-20 साल के अंदर जो एडोलेसेंट है, बिकॉज दे आर नॉट conscious, they don't have proper education, sex education and anything, so they are affected by high risk behavior. Also they have certain experiment with the drugs, alcohol, smoking, adventures, जो चीज करते हैं उसमें भी वो लोग हाई रिस्क हो जाते हैं। और so in adolescent stage is a very difficult stage to predict about future. तो उसमें अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया जाए और प्रॉपर पेरेंट्स कॉन्शियस नहीं हुए, अपना बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो दे विल बी हाई रिस्क। सो these are the all challenges and issues in adolescent development. different challenges, सुसाइड कर लेते कुछ लोग घर छोड़ के चले जाते, कुछ लोग और कुछ काम करते हैं, कोई क्रिमिनल बन जाता है मार के दूसरे को। तो ये स्टेज इज वेरी डिफिकल्ट स्टेज, एंड टू मैनेज दिस स्टेज इन ए वेरी हेल्दी वे, सो पेरेंट्स शुड बी कॉन्शियस। पेरेंट्स को प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए। फिर एडोलेसेंस जो भी है उनको अच्छे से ठीक लाइन पे लेना चाहिए, अदरवाइज दे विल बी आउट ऑफ ट्रैक, आउट ऑफ वे। सो दीज आर द सर कोर्स। यस, सर टेल ओडिशा मी। में कोई पेरेंट काउंसलिंग की कोई सेशन या स्कीम्स वगैरह चलती हैं क्या गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट में नहीं, ये होता है जैसे एचआईवी एड्स को, हाँ मैंने एचआईवी एड्स के लिए देर आर नंबर ऑफ काउंसलर हर हॉस्पिटल में। आप देखेंगे यूनिट 6 कैपिटल हॉस्पिटल, खुर्दा हॉस्पिटल, ब्रह्मपुर मेडिकल कॉलेज, कटक मेडिकल कॉलेज, ये सब में काउंसलिंग होता है फॉर एचआईवी एड्स, नॉट फॉर जनरल काउंसलिंग। पेरेंट्स को होता है, जो क्लाइंट है उसके लिए काउंसलिंग होता है, टेस्टिंग होता है, बिफोर टेस्टिंग काउंसलिंग, आफ्टर टेस्टिंग ऑल्सो काउंसलिंग। काउंसलर बैठे हैं हॉस्पिटल में सब। आप किस टाइप का काउंसलिंग चाहते हैं? नहीं सर, एक जनरल आइडिया लेना था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम्स वगैरह चल रही हैं, जैसे अगर हम लोग सोसाइटी को मतलब इम्प्रूव करने की अगर कोशिश कर रहे हैं
तो ऐसा पेरेंट काउंसलिंग और टीनेजर्स की काउंसलिंग तो जरूरी है ना। हॉस्पिटल में देयर इज ए पोस्ट काउंसलर पोस्ट, मगर उनको ज्यादा एम्फासाइज मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, कुछ साइकोलॉजिस्ट है, वो लोग भी काउंसलिंग कर सकते हैं। हाँ, यस। सर जो अभी मैं बरहमपुर से हूँ स्पेसिफिकली, जो एमपीसी मेडिकल कॉलेज है, इधर एक साइकियाट्री डिपार्टमेंट है। हाँ। इधर साइकोलॉजिस्ट अभी है, और जैसे अभी ये पूछ रहे थे, एक स्कीम चलता है टेली मानस समथिंग, एक टोल फ्री नंबर है, वो भी ऐसे काउंसलिंग के लिए हेल्पफुल रहता है वैसे। अच्छा। हाँ। वो हाँ। काउंसलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ काउंसलिंग देते रहते हैं टाइम बाय टाइम, अगर आप अच्छा। कांटेक्ट करते हैं वैसे। हाँ। क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था, मैं एक्चुअली आई वाज इन रेवेन्सा कॉलेज फॉर सम टाइम टेम्पररीली। सो रेवेन्सा कॉलेज में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एक दो स्टूडेंट थे कुछ, वो एक बरहमपुर में उसको मिला है, बोल रहा था काउंसलर है अभी कोई स्टूडेंट मेरा। तो है काउंसलिंग के लिए है, बरहमपुर में है, कटक हॉस्पिटल में है, आपका इधर अदर प्लेसेस में काउंसलिंग का एटमॉस्फेयर है, काउंसलिंग जनरल के लिए ऐसे नहीं। किसका मोबाइल चल रहा है बहुत जोर से, आप कर दीजिए। हाँ, 15 मिनट है और 15 मिनट्स। सर गवर्नमेंट का गवर्नमेंट एडोलेसेंट का है यहाँ। रिप्रोडक्टिव हाँ, गवर्नमेंट का आपका जो सर एआरएसएच प्रोग्राम भी चल रहा है, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ का, उसमें भी बहुत सारे हॉस्पिटल में चीजें है। बताए जाते हैं। हाँ। और बहुत डिफरेंट काउंसलिंग, बहुत डिफरेंट काउंसलर्स हैं स्पेसिफिकली, बट ये एआरएसएच प्रोग्राम के तहत एडोलेसेंट को कवर करते हैं। किया जाता है, और they used to discuss various sectors related to uh, adolescence. बिल्कुल। हाँ। और आपका जो ये है, क्या नाम है, सर कैपिटल। एंगर मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट यूजुअली मेंटल हेल्थ कवर करता है, और एक प्रोग्राम है स्कूल, अभी तो स्कूल टीचर लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, और उनको हम एनकरेज करते हैं पेरेंट टू कन्वे पेरेंट ड्यूरिंग पेरेंट्स मीटिंग्स बिल्कुल। what they are being taught during the sessions. अभी काम कर They रहे are हैं, encouraged to, excuse अभी me काम sir. कर रहे हैं। यू आर आल्सो वर्किंग इन दिस। Yeah sir, I'm a mental health professional. हाँ, कहाँ पे किस जगह पे? Sir, no sir, I'm mental health professional. I was in Jaspur District Headquarters Hospital, and now I'm working for prisoners. ओके प्रिजनर्स। Yeah. बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका क्वालिफी मतलब पहले क्या डिग्री है, डिग्री क्या की? Sir, I'm graduate in psychology, then masters in social work, and MPhil in psychiatric social work from ACB हाँ Medical College. आफ्टर दैट यू आर आल्सो डूइंग एमए इन साइकोलॉजी। Yeah, for some personal requirement, I'm वेरी legal, गुड। हाँ। some personal requirements. I'm doing this. ओके वेरी गुड Yeah, बहुत बढ़िया। not exactly for qualification, but some पर्सनल legal रिक्वायरमेंट, aspects. नॉलेज एंड एबिलिटी। ओके, नो प्रॉब्लम। एनी Legal अदर aspects. स्टूडेंट साइकोलॉजी का है आपका ग्रुप में, आउट ऑफ 26? Sir, we have CP and PSW, clinical psychologist, MPhil in clinical psychologist. They are called clinical psychologists, and MPhil in psychiatric social work, they are called psychiatric social workers. बिल्कुल Both are therapists, हाँ। psychotherapists. Mental health program, mane, that is this is a teamwork. A psychiatric doctor and two therapists, CP, clinical psychologist and PSW, and community nurse and psychiatric nurse. This is a team, and this is comprising of 6 persons, and they are all doing for the medical and community and individual requirements of the वेरी area. गुड। अभी यू आर पोस्टेड इन जाजपुर नाउ, जाजपुर। Sir, I was in Jaspur, but now I'm in District Jail, Dhenkanal. एट ढेंकानाल, वेरी गुड। Yeah. फ्रॉम वेयर, फ्रॉम होम कितना दिन हो गया, कितने दिन? Sir,
When you joined? I joined 1st May 2023 at Okay. District Jail Dhenkanal. Before that, since June 2021, I was in Jaspur Hospital. Very good, very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Actually, previously I was in American Red Cross. Okay, American Acha. Red Cross. I was trained in disaster mental health and psychosocial care. We are trained from different people from Nimans, Bangalore, and other we trained. After that, Sir, I was in that team too during my SCB, during my NPhil. I was in that team which too. year? Which year? 2017. No. I am talking about that is 2003. बहुत Okay, पुराना है. 2000. आप कितना उम्र छोटा, बहुत छोटा उम्र होगा, स्कूल में पढ़े This होंगे. time, sir, that program was going. That program is going on, sir. Demands हाँ, is still continuing. that training program. Yeah, training I was programs and also, I am also trained in that field. One training program is psychological first aid. You know that term? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You got the training? Yes, No. sir. Yes, from Yes, sir. medical college, Katak Medical College. Yes, sir. SCB Medical College. Very good, very good. बहुत बढ़िया. So sometimes I also applied that knowledge to different places, psychological first aid, because I was trained, master trainer. Yes, sir. Yes, sir. I also completed my PhD from Banaras Hindu University in psychiatry department. Acha. Anyway, so different things I also experienced. Any other question, students? 10 minutes only. Thank you, sir. Thank you. Any other question you ask me? Any other student? Sir, may I know which scale is used for self-concept test? Self-concept. I'll show you. Actually, I have that material. Next class, I'll tell you. Okay, details about it. Don't Sure, worry. sir. Sure. Thank you. Thank Next class means tomorrow. Tomorrow, I'll tell you. you. Sure, sir. Thank you. Okay. Your name, please? Vijay Lakshmi Das. Vijay Lakshmi Das. You completed your master degree where? Not master degree. Graduation from where? Graduation from Women's College, Dhenkanal. Dhenkanal. You belong to Dhenkanal? You belong Yes, to? sir. Okay. Yes, sir. Very good. Very good. Okay. Nice meeting. Any other question? Please tell me. Anybody? Challenges and issues in adolescent development. I'm just repeating the challenges and issues. 5 minutes per 5 minutes again. Actually, for the adolescent, this period is very dramatic challenge, one requiring adjustment to changes in the self, in the family, and in the peer group. This is time when a teenager undergoes a lot of changes physically, chemically, and emotionally also. During adolescence, parents should play a highly supportive role. They have all the necessary experience, resources, and maturity to make this transition as quick as easy as possible. No doubt, teenagers love their parents, but they don't want to follow in the footsteps of the parents. They end up highlighting their strength and playing down their weaknesses. There are differences among adolescents in such characteristics which mark influence adolescent behavior. Adolescent is full of challenges for any individual. And talking about sex, especially the sexuality of the adolescent makes the parents feel uncomfortable. Parents wish that their youngster have safe and fulfilling sexual lives. They may feel uneasy about sex education, believing that ignorance will prevent sexual activity. The main issue for the parents to make up their mind regarding addressing the sexual issues rather than avoiding. It is important for parents to ask direct questions about what a youngster knows about sex, his desires and worries. So this is about something challenges about adolescence. We discussed, and there are some negative self-concept
I repeat, there are some sign of negative self-concept in adolescents. They are doing poorly in school, having few friends, putting down oneself and others, being excessively jealous, hesitating to try new things, rejecting compliments, strategy that can be used to improve an adolescent's self-concept. Oh. So if you go through the total units, there are some important questions maybe. Uh, Maybe one question maybe. Uh, what are the challenges and issues in adolescent development? Sir, Student, hello? loss of normalcy. Loss of normalcy. Loss of normalcy means normal behavior. Loss of normal behavior. You, you want Loss to of normal understand? behavior. Loss of normal behavior. In adolescent stage, actually, they are, because of their challenges and issues, they are not continuing a safe, always safe, and they are losing normalcy many times. Very some cases they are in confronting with high risk behavior, adolescents. So it is important to understand the interest, ability, and knowledge of the adolescent. What are their activities in a, suppose in a day, particular day, suppose you go through the timing, maybe in the house, parents and everybody is busy in different works. At that time you need to understand, need to know where is the child, and what time he's going to college or school, where he's going and what he's doing, and sometimes taking the report from the teacher and other people. Those are associated with friends maybe of the your child. That is very important to concern about these people. Then the adolescent can go through a proper order and happy life and continuing a good behavior also. Okay, any other question? Sir, can you please repeat the question? Repeat the मतलब question. आपने अभी Okay. जो question Yeah, please write. Discuss what are the challenges and issues. Discuss what are the challenges and issues in adolescent development. Discuss what are the challenges and issues in adolescent development. थैंक यू सर सर ये पूरे चैप्टर में ये बस एक ही क्वेश्चन है No, इम्पोर्टेंट there are different questions. I'll tell you another question. Another, explain the physical development during adolescent period, in late adolescent period. Discuss the physical development in late adolescent period. Next question is, what is cognitive development? What is cognitive development? What is cognitive development? What is cognitive development? And discuss the different stages in cognitive development. Specifically,
discuss the different stages of Piagetian cognitive development, Piagetian theory of cognitive development. You're writing? Yes, sir. Piagetian theory of cognitive development. Focusing on formal operational stage. Focusing on formal operation stage. Applicable to adolescents. Formal operational stage applicable to adolescents. Next question, distinguish between self-concept and self-esteem. Self-concept and self-esteem. Distinguish between self-concept and self-esteem. With reference to adolescence. Small question, a short question may be signs of negative self-concept in adolescent. Sign of negative self-concept. Sign of negative self-concept in adolescents. Hello? Yes, sir. Sign of negative self-concept in adolescent. Sign of negative self-concept in adolescents. बस इतना ही है. Next class I'll tell you other things. Okay. Thank you, sir. Hello. Thank you. Thank you, sir. All the Thank you, best. sir. Thank you, sir. Thank you, I'll sir. send the slides. Okay, no problem. I'll share you the slides. Okay. Okay. Thank you. All the best. हेलो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक व्हाट्सएप रे शेयर करिवे कि लेक्चर भलरे आप व्हाट्सएप स्टॉप कर दे. Okay, thank you. क्या हम असाइनमेंट 2 सेट रोल पेपर में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं. उसको वन साइड में राइट लिखें या बोथ साइड राइट करें? वन साइड लिखेंगे, दूसरी साइड नहीं लिखेंगे. ओके, थैंक यू. वेलकम.